Hello kids. So today we are going to talk about DU LLB. हमने काफ़ी सारी एंट्रेंस टेस्ट्स कवर की है यस एकेडमी के चैनल पर आप वो सारी एंट्रेंस टेस्ट की इंफॉर्मेशन देख पाएंगे. I am Amruta Chajed and today we are going to talk about Delhi University's law course. So that is DU LLB and the entrance test that you need to appear for to get admission in this college. चलिए देखते हैं. So DU LLB, there are three test centers. There are three centers that they have. तीन campus है इनके. That is Campus Law Center. That's Faculty of Law, Law Center 1 and Law Center 2. So ये तीन colleges के लिए ये DU exam होता है. Campus Law Center, then you have Law Center 1 and Law Center 2. इसमें कोई रैंकिंग ऐसा नहीं है, ये सारे तीनों अच्छे कॉलेजेस है एंड दे आर एट पार विथ ईच अदर देन कॉलेज टाइमिंग्स सीरियसली नो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. फैकल्टी अच्छी है, सपोर्ट स्टाफ, लाइब्रेरी, you know, all the factors are equivalent in all these three centers. आगे बढ़ते हैं. Now seats कितने हैं? अगर you know, you can see the table here. You are as unreserved category and बाकी सारी reserved category के लिए seats है. तीनों centers में very similar number. So you know 1156 यहाँ पे total है. Unreserved category के लिए 390 seats है. Then you have OBC, 260, SC, ST. All these categories are there. So total मिला के 1156 seats है. That this is what I'm talking about, Campus Law Center. If you go to you know Law Center 1, again 1154, very similar. Campus Law Center 2, 1156. So across very similar number of seats you have in all these three centers. Now exam dates. This is a tentative schedule. तो मार्च में इनके फॉर्म्स आएंगे. 3rd week of जून में इनकी लास्ट डेट होगी टू अप्लाई फॉर द entrance test. 4th week of June they'll release the admit card. 1st week of July would be your entrance test. 2nd week of July they'll release the dates and 3rd week of July जिनको जिनको यहाँ पे admission मिली है उनकी counseling होगी. So yeah, if you compare this with other law entrance test, इनका schedule थोड़ा सा later है. So you know जुलाई तक जाता है. Now let's understand the section wise distribution of marks. They have 4 sections here. You have English language, general knowledge, analytical abilities, legal awareness and aptitude. Now we are going to talk about analytical abilities थोड़ा सा ज़्यादा because यहाँ पे मुझे कुछ highlight करना है. But number of questions if you go to see, and it's variable every year. Okay, so ऐसा नहीं है कि 20 marks का ही English है, 30 marks का ही law है, ऐसा नहीं है. I've just given you a bracket. ये इस bracket में थोड़ा variable होता है. So 15 to 20, 20 to 25 is general knowledge, 20 to 25 again is your analytical ability. 25 to 30 is legal awareness and aptitude. So legal awareness and aptitude के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे weightage है 25 to 30. Now about legal awareness, like I said, ये सारे subjects के लिए I'll be talking more you know in the following slides. Now current answer के लिए आपको 4 marks है. Negative marking is -1. So yes, DU does have negative marking. Please remember. Unanswered के लिए you won't be getting any score. Like कोई negative marking नहीं है if you do not answer a particular a question. But अगर आप answer करते हो गलत होता है तो -1. Total marks 400. Yeah, I mean 400 marks का पेपर देने जा रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लगता है. But every question has 4 marks, -1 negative marking. Okay, so 100 questions. Obviously, if you apply maths here, it's 100 questions. So we've got the number of questions as well there. Now, exam pattern कैसे है? Online है, English medium है. Test duration is 2 hours. So 400 marks है तो इसलिए 3-4 घंटे का exam नहीं है. It's still 120 minutes like most other law entrance tests. MCQs है इनका pattern and 100 questions like I said. Eligibility is you have to have already cleared your graduation exam. So while giving the test, obviously it's provisional.
योर आपको प्रोविजनल अलाउ करते हैं टेस्ट देने के लिए, उसके बाद भी अगर आपका स्कोर होता है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बट ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट यू रिक्वायर टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB के लिए, ठीक है. सो इंटीग्रेटेड कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट ऑफर इंटीग्रेटेड कोर्सेज. जो BA है, BBA है, ये कोर्सेज वो नहीं ऑफर करता है. सो BA LLB, BBA LLB ये वाले कोर्सेज नहीं है. चलिए, नाउ English, let's look at the syllabus that we have. 3 things here: vocabulary, grammar, comprehension. Okay, so you have to concentrate on all 3. Vocabulary, for example, कौन से type के questions पूछे जाएंगे? What is the synonym of this word? What is the antonym of this word? So ये vocabulary का section हो गया, yeah? और correct the spelling of the following words. So again, that becomes a part of vocabulary. Grammar, you have sentence correction. That's a part of grammar. Then comprehension, you have passages given and you have to answer the questions. Right, now whenever you have a comprehension passage होता है, उसमें direct और indirect questions दोनों पूछे जाते हैं. So direct questions are जिनके answers आपको directly passage में होंगे, और indirect questions वो वाले होते हैं जहाँ पे आपको answer खुद से you have to read the passage and you have to derive the answer in terms of what is the tone of the passage. So the tone of the passage is not given in the passage. They would not say कि this is descriptive passage, ऐसा नहीं है. आपको passage पढ़ना है and you have to derive your answer कि इस passage का tone कैसा है. Yeah, so such questions are also asked. So direct and indirect questions. Yeah. Now, so I've pretty much summed up for you the entire English language syllabus. Spotting the errors, yeah, correct spelling, जैसे वो vocabulary का part, etc. Now, general knowledge, static and current, both are asked. Again, very similar to what other entrance tests have. यहाँ पे भी जनरल नॉलेज को 2 में डिवाइड किया गया है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK. सो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी, और टॉपिक्स भी वेरी सिमिलर है: पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स फॉर स्टैटिक. एंड करंट अफेयर्स आपको लास्ट 7-8 मंथ्स का ज़्यादा पढ़ना है. हाईली रिकमेंडेड 7-8 मंथ्स है, उसके पहले का भी यू कैन स्टार्ट. सो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट के 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, एंड आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है लास्ट 7-8 मंथ्स पर. देन एनालिटिकल एबिलिटीज, लाइक आई सेड, मुझे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फर्दर. इसमें मैथ्स भी है, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं, दूसरे टेस्ट्स में मैथ्स नहीं पूछा जाता है. लाइक MHCT हैज़ अ सेपरेट मैथ सेक्शन, ओके. और ग्रेजुएट मतलब LLB जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है MHCT, उसमें तो मैथ्स है ही नहीं, बट DU हैज़ मैथ्स, और उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है. सो बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस आउट करते हैं एंड दे जस्ट स्टिक टू रीजनिंग, बट ऐसा नहीं है. DU में मैथ्स भी पूछा जाता है, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स एज वेल. But apart from that, reasoning में है statement assumption, you have number test, coding, decoding, blood relations, directions, pretty much similar to the other entrance tests. And along with that, you have to study number system, percentage, average, profit loss, time and distance, probability, Venn diagrams, ये सारा आपको करना है. I'm not saying बस maths पूछा जाएगा, but maths भी पूछा जाता है, और ये hidden है under analytical abilities. So मैथ्स तो फेस करना पड़ेगा बॉस. या लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस. नाउ देयर इज अनदर फैक्टर जो इज स्लाइटली डिफरेंट द अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट. इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉट है, मैग्जिम्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट अवेयरनेस भी. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट लीगल अफेयर्स, ऑल्सो ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट्स दैट हैव बीन pronounced by the Supreme Court. So ये दोनों आपको करने हैं. So legal awareness is almost like legal affairs for that year. So आपको legal affairs पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ने हैं for that year. Yeah. So and then legal aptitude, principal fact questions आते हैं. Yeah. So that is legal aptitude, but legal awareness is almost like current affairs of law. So legal affairs आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं. Let's look at the test centers that we have. Yes, काफ़ी सारे test centers है. They've given
if you start with Ahmedabad, Gandhinagar, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Guwahati, Hyderabad, ये सारे इसमें जम्मू, कोलकाता, so they have pretty much covered most of the states यहाँ पे through cities, like these are the cities that I'm talking about: Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Viशाखापट्टनम. So ये सारे टेस्ट सेंटर्स है, यहाँ पे आप जाके आप अपनी एग्जाम दे सकते हो. Yeah, चलो let's move further. Now this is something that I wanted to point out because ये I usually do discuss questions when I talk about any particular law entrance exam. तो ये जो है, let's understand this. We are clear syllabus क्या है, we are clear कितने marks का question paper है, we are clear negative marking है, we are clear that legal aptitude के साथ legal awareness है, analytical abilities के साथ maths is included in analytical ability, so you have to be careful with that. We are also clear कि legal aptitude का या फिर legal part का weightage सबसे ज़्यादा है. Yeah. Which of the following book is correctly matched to the author? Okay, Rabindranath Tagore and all these authors have been given. Now this is static GK. So like I said, static GK में आपको books and authors नाम जानना, जो famous authors है उनके नाम जानना, उनकी books जानना ज़रूरी है. This mostly, what I've observed is related to the Indian authors, Indian books. Okay. So I'm not saying बहुत ज़्यादा कर लो, but जो Indian authors है उनको तो आपको पक्का याद करना है. Then, on August 15, 1947, the Cabinet of Independent India consisted of, then they've given the option and then you choose the correct option. Russian Revolution took place in the year. So again, this is static GK, काफी पहले का पूछ रहे हैं ये. Financial Inclusion Index is to be released by which of this body? Which among the following launched the Online Dispute Resolution Handbook? Yeah, again, if you see Online Dispute Resolution Handbook, it's also related to legal affairs. So because it's talking about dispute. Then further, let's understand. So yeah, you're clear with what kind of legal awareness questions are asked. Static GK क्या है? Again, moving further, the Nobel Prize for 2020, because ये मतलब पहले का क्वेश्चन पेपर है, दिस इज 21-22 का जो क्वेश्चन पेपर है, दैट्स वाई 2020 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. अगर मतलब जब आप 23 का एग्जाम देंगे तो ये 2020 का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, करंट अफेयर्स ऑफ दैट ईयर. Nobel Prize in Physiology or Medicine was is awarded by, so कौन से इसमें? So this in a way Nobel Prize, you have to know कि उस साल Nobel Prize किसको दिया. But if you observe this question, the Nobel Prize in Physiology or Medicine is awarded by, that is a part of static GK. It's not current affairs because this is, ये हमेशा जो होता है, that is given by A, जो A option है यहाँ इन ये ही देती है. So the Nobel Assembly, Stockholm में, स्वीडन में, ये वाली this institute awards the Nobel Prize in Physiology. So ये static का part हो गया अभी. Yeah. So next, let's look at the next part. एक यहाँ पे I wanted to highlight. Just give me a minute. Check the 30th question. A person sold a watch for rupees 1520 and thereby loses 5%. In order to gain 10%, she has to sell the watch for. So again, this is your selling price and cost price, selling price, everything. This in a way is a part of math, but has been asked here. So आपको math करना ही है. Of the three numbers, the first is the half of the second and twice the third. The average of these numbers is 42. Okay, I'm not kind of डरा नहीं रही हूँ, but yeah, you just have to know maths. And because it's analytical ability में, तो उसका weightage clear नहीं है कि कितने के लिए आएगा. This is the passage that we have. I've already told you passage में कैसे type के questions आते हैं, direct, indirect, and passage दिया गया है. The reason that Locke's theory has survived the test of time is because of these reasons. Again, you have to go through the passage. ये indirect question है.
ये डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं दिया गया है. दैट वी ऑल आर गॉड्स प्रॉपर्टी, दैट वी ऑल आर नोबडीज प्रॉपर्टी, दैट हिज थ्योरी वॉज सेक्युलर. All those options have been given. So such type of questions would be asked. DU के बारे में just in short 400 questions, 100 questions, 400 marks का paper है, negative marking है, and you have only 120 minutes. So ऐसा नहीं है कि 400 marks का paper है तो ज़्यादा time है. 100 questions है, 120 minutes है. Legal awareness, two things that in a way differentiates DU entrance is one, legal awareness hai, and second, we talk about analytical ability, maths is also included. If you have any further questions related to DU entrance test, do put them in the comment section and I'll be happy to answer all of them. Thank you so much. All the best and bye.